morning everyone. Myself Sheikh Habibul Rahaman, Secretary cum Additional Scientific Officer of Prantik KRD Earth. Today we have discussed map projection and its types. What is map projection? Map projection is the method of transforming the latitude of latitude and longitude on a plane surface. मैप प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग जो रियल वर्ल्ड है वो बेसिकली 3D है, तो उसको मैप में बनाने के लिए हम लोग 2D सरफेस में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं वो है मैप प्रोजेक्शन. व्हाट इज नीड फॉर मैप प्रोजेक्शन? मैप प्रोजेक्शन का जरूरत क्या है? द नीड फॉर ए मैप प्रोजेक्शन मेनली अराइज टू हैव a detailed study of a region which is not possible to do from a global. इसका मतलब क्या है? हम लोग अगर कोई स्टडी एरिया को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मैप चाहिए. तो बेसिकली हम लोग जो ग्लोब है अर्थ सरफेस है वो 3D सरफेस है, तो 3D सरफेस में हम लोग डिटेल स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग उसके लिए क्या चाहिए? मैप. तो मैप बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है? मैप प्रोजेक्शन, क्योंकि हम लोग 3D सरफेस के 2D सरफेस में रिप्रेजेंट करना होगा, तब हम लोग उसको डिटेल स्टडी कर पाएंगे. सिमिलर इट इज नॉट इजी टू कंपेयर टू नेचुरल रीजन ऑन ए ग्लोब. मतलब दो नेचुरल रीजन का कंपेयर करना होगा तो मैप चाहिए, लेकिन ग्लोब में ए मैप चाहिए. Similar, it is not easy to compare two natural region on globe. Globe में हम लोग दो natural region का compare नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए map projection को जरूरत है. Elements of map projection. First component क्या है? The reduced earth. So what is reduced earth? A reduced earth model of the earth is represented by the help of a reduced scale on a flat sheet of paper. This model is called the reduced earth. इसका मतलब क्या है? हम लोग का जो अर्थ है उसको अगर हम लोग प्लेन शीट में, मतलब हम लोग जो शीट में यूज कर सकते हैं, जैसे A4 में हम लोग अगर लिखे आए तो उसका जो स्केल है उसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का जो एरिया है वो तो एक प्लेन पेपर में नहीं आएंगे. तो वो जो रिड्यूस स्केल को जो रिड्यूस करेंगे करके प्लेन पेपर पे लेके आएंगे, उसको उस मॉडल को क्या कहते हैं? सेकंड कॉम्पोनेंट इज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. दोस आर द सर्कल्स रनिंग अराउंड द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर एंड मेंटेनिंग यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स. Each parallel lies wholly in this plane which is at right angle to the axis of the earth. Meridians of longitude. इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन का थर्ड कंपोनेंट है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. Those are semicircles drawn in north-south direction from one pole to another pole, and two opposite meridians make a complete circle, that is circumference of globe. Fourth component क्या है? Global property. In preparing a map projection, the following basic properties of the global surface are to be preserved by using one or other methods. हम लोग जब मैप प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसके लिए कितना चार मेथड होता है. एक, डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन पॉइंट्स और रीजन. हम लोग का जो पॉइंट्स है, एनी पॉइंट्स ऑफ रीजन, उसका जो डिस्टेंस है दोनों का. सेकेंड, शेप ऑफ द रीजन. हम लोग जो मैप ये कर रहे हैं, रीजन का मैप बना रहे हैं, उसका शेप
थर्ड साइज ऑफ द रीजन इन एक्यूरेसी, उसका जो साइज और एरिया है उसका एक्यूरेसी। फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ एनी वन पॉइंट ऑफ द रीजन वेयरिंग टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। हम लोग मैप प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ड्राइंग टेक्निक्स, हम लोग ड्राइंग टेक्निक से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑन कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्शन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू पर्सपेक्टिव, नॉन पर्सपेक्टिव एंड कन्वेंशनल और मैथमेटिकल। ड्राइंग टेक्निक से थ्री टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, सेकेंड है नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, थर्ड इज इक्वल टू मैथमेटिकल प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कैन बी ड्रॉ टेकिंग टू हेल्प ऑफ surface of light by projecting the image पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कैन बी ड्रॉन टेकिंग द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ लाइट by projection the image of a network of parallels and meridians of globe on developable surface। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हम लोग सोर्स ऑफ लाइट का हेल्प से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आर डेवलप विदाउट द हेल्प ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट। जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था और हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट के हेल्प से हम लोग उसको ड्रॉ करते थे। और नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है? विदाउट लाइट, विदाउट हेल्प ऑफ लाइट, कोई लाइट का सोर्स का। नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आर डेवलप विदाउट द हेल्प ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट। हम लोग जब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पढ़ा था तो उसको क्या कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इट सोर्स ऑफ लाइट, हेल्प ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट। और नॉन पर्सपेक्टिव में है विदाउट हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। थर्ड मैथमेटिकल प्रोजेक्शन। Mathematical projection are those which are derived by mathematical computations and formula and have little relations with the project image. Second, developable surface. Map projection को developable surface is one which can be flattened developable surface is one which can be flattened and on which a network of latitude and longitude can be projected. On the basis of developable surface हम लोग प्रोजेक्शंस को थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, दो कॉनिकल प्रोजेक्शन, थ्री जेनिथल प्रोजेक्शन। तो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या है? सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन आर मेड थ्रू द यूज ऑफ सिलिंड्रिकल डेवलपेबल सोर्स। तो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन overs the globe and parallels and meridians are projected on it। जब हम लोग सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्लिक कैसे प्रिपेयर करते हैं? द यूज ऑफ सिलिंड्रिकल डेवलपेबल
सोर्स। उसके बाद कॉनिकल प्रोजेक्शन, सेकेंड कॉनिकल प्रोजेक्शन। ए कॉनिकल प्रोजेक्शन इज ड्रॉन बाय wrapping a cone around the globe and the shadow of vertical network is projected on it. When the cone is cut open, जब हम लोग conical projection को काटेंगे, a projection is obtained on a flat sheet. Third, zenithal projection. Zenithal projection is directly obtained on a plane surface. When plane throws the globe at a point and the vertical is projected on it. तो vertical project को further subdivision कर सकते हैं दो टाइप में, एक normal और second is oblique और polar. Normal projection क्या है? The normal projection, if the developable surface touch the globe at the equator, it is called normal projection. हम लोग second क्या है? The polar projection, if it is tangential to a point between the pole and the equator, is called oblique projection or polar projection. Third, global properties. The global properties. Global properties क्या है? As the mentioned above, the correctness of area, shape and directions and distance are four ग्लोबल प्रॉपर्टीज। ग्लोबल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग मैप प्रोजेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज ग्लोबल प्रॉपर्टीज? एज द मेंशन अबव, द करेक्टनेस ऑफ एरिया, शेप, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आर थ्रू फोर मेजर ग्लोबल प्रॉपर्टीज टू बी प्रिजर्व इन ए मैप। तो ग्लोबल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कितने हम लोग इसको फोर्थ टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, टू ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, थ्री एजिमुथल प्रोजेक्शन, फोर्थ इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन। फर्स्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन क्या है? इक्वल एरिया प्रोजेक्शन इज कॉल्ड होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसका इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का और एक नाम है, जिसका नाम है होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। इट इज दैट ए प्रोजेक्शन इन व्हिच एरियाज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर रिप्रेजेंट करेक्टली। इक्वल एरिया प्रोजेक्शन से हम लोग वेरियस टाइप का एरिया को ऑफ द अर्थ, वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थ are represented correctly. Orthomorphic projection. Orthomorphic or true shape projection is one in which shape of various areas are portrayed correctly. Third, azimuthal projection. Azimuthal of true bearing projection is one on azimuthal projection. Azimuthal or true bearing projection is one on which the direction of all points from the center is correctly represented. Fourth, equidistance projection. Equidistance or truly scale projection is that
where the distance or scale is correctly maintained. On the basis of source of light, हम लोग प्रोजेक्शन को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? ऑन द सोर्स ऑफ लाइट हम लोग प्रोजेक्शन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एक गेनोमिक, 2 स्टेरियोग्राफिक, 3 ऑर्थोग्राफिक. गेनोमिक प्रोजेक्शन क्या है? गेनोमिक प्रोजेक्शन इज obtained by putting the light at the center of the globe. Second, stereographic projection. Stereographic projection क्या है? Stereographic projection is a drone when the source of the light placed at the periphery of the globe at a point diametrically opposite to the point at which the plane surface touches the globe. Third, orthographic projection. Orthographic projection is drawn when the surface of light is placed at infinity from the globe opposite to the point at which the plane surface touches the globe. Thank you.